Hello guys and welcome to my new channel Software Mentor. My name is Afsab Chandiwala and I am a Java full stack developer. मैंने Bachelor's of Computer Science किया. Then I have done a course of Java full stack developer and I'm currently a Java developer in a reputed company. Whenever you do a degree from a college, आप कोई भी BSc कंप्यूटर साइंस, BTech इन सॉफ्टवेयर, BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BSc IT, BCA, MCA, जो भी आप करके आओगे आप लोगों को एज अ फ्रेशर जॉब मिलेगा. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों को जॉब मिलेगा, बट rather than going for a job as a fresher we need to upgrade our skills. So मैंने एक कोर्स किया था which I have paid for it. It's called Java full stack developer and मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है Java full stack developer का. So मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल बनाया जाए. वो चैनल के थ्रू जो BSc कंप्यूटर साइंस में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स की, जावा प्रोग्राम्स की, जो मैंने फेस कर चुका हूँ मेरे डेवलपमेंट पीरियड के टाइम पे या तो मेरे कॉलेज टाइम पे या डिग्री टाइम पे बोल सकते हैं. तो ये चीज़ को बचाने के लिए, ये चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए मैं चैनल बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर मेंटोर. ये चैनल के थ्रू मैं आप लोग को बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताऊँगा. इफ़ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स, अभी मैं वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड आगे जाके आई कैन गो फॉर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, सेलेनियम टेस्टिंग, C++, C# एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट जो मैं एक सीरीज़ निकाल रहा हूँ वो है, सीरीज़ का नाम होगा एंड जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है जावा full stack development. गाइस जो मैं आपको ये सीरीज़ के थ्रू मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो मैं आपको अभी अच्छे से बताता हूँ कि उसमें क्या क्या कोर्सेज आएगी, क्या क्या पार्ट्स है उसके एंड एवरीथिंग. सो मेरी फ़र्स्ट वीडियो बेस्ड रहेगी इंट्रोडक्शन के ऊपर. सो मेरी फ़र्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी जो है इंट्रोडक्शन टू जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट. एंड मैं पार्टली वाइज हर टॉपिक को मैं समझाऊँगा एंड हर टॉपिक को मैं कवर करूँगा. Not on a good pace, but I'll try to complete it very slowly and understandably. Okay? So I'll make sure कि आप लोगों को हर चीज़ एक एक करके समझ आए, अंडरस्टैंड हो एंड आपको फ्यूचर में ये चीज़ें हेल्प करें. And I also give you the questions and I also provide you with some projects and I also help you to make some projects so that you can add that projects in your resume and we'll practice some questions. I'll give you some activities and I'll post each and everything that will help you in your future and it will help you to become a good developer. So let's start. So the course name will be Java full stack development. So in Java full stack development we'll cover many things. So as you guys know, it is divided in 3 parts. First is front end, middleware, or we can say backend,
third is database. So now coming to the front end topic. Front end basically means, okay, what front end basically means, front end is something that a user can see. It is visible to the user. विजिबल है जो UI जो यूज़र को विजिबल है, इसे हम फ्रंट एंड बोल सकते हैं. ओके, जो तो विजिबल है वो चीज़ है, तो जो यूज़र को विजिबल है एंड यूज़र कैन हैव अ कॉन्टैक्ट विद वेब पेज, जो हमें मालूम पड़ेगा कि वेबसाइट के ऊपर ये किस टाइप की वेबसाइट है या किस डोमेन की वेबसाइट है, एंड वेबसाइट पे क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एंड व्हाट वी सेल, व्हाट वी परचेज, और व्हाट वी कैन बी एबल टू, लाइक व्लॉग वेबसाइट्स भी होती है. सो जो भी इसके अंडर आता है, वेबसाइट के अंडर आता है, जो यूज़र को विजिबल होता है, वो होता है फ्रंट एंड. सो बेसिकली जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वो है फ्रंट एंड, मिडलवेयर, बैक एंड एंड डेटाबेस. सो इन फ्रंट एंड, एज अ डेवलपर, most of us use VS Code as software to make HTML file, to make CSS file and to make JavaScript file. So front end के अंदर आता है HTML, CSS, and there are some frameworks of CSS. It is called as Tailwind, Bootstrap. ये आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा कोर्स के अंदर कि ये किस काम आता है. What are the uses of Tailwind, what are the uses of Bootstrap, and believe me, this will change your life. Tailwind and Bootstrap are the websites that are most useful for a front-end developer. Okay. Coming to JavaScript. JavaScript is used to give functionality to the CSS. Like if we design a structure of a button through HTML, and then we give some styling properties through CSS to that button. So when we click to that button, it will show some changes, or it will show some functionality. Like if we click on that button, so that button will lead us to a page which has a description of that product. So basically JavaScript gives functionality to the structure of HTML, which is designed through CSS. So there are many libraries in JavaScript, and React.js is one of that libraries. So we'll come to know in deep what is the use of React.js and what are the functionalities of React.js and what are the features of React.js. Coming to backend, we'll be learning about core Java, and then we'll be learning about advanced Java. Coming to core Java, most of us from IT background or computer science background will have an idea of what is Java. So Java is a programming language. So in core Java topic, we'll be covering what are classes, what are constructors, what are methods, what are objects, how we can write a basic structure of a program in Java, how we can save the program, how we can run the program, what are operators, what are operands, what are typecasting, what are literals, variables, data types. All these topics and much more will be covered under Java core. In Java Advanced, we'll be learning about how to connect front end to back end to database. Okay, so this will also cover some topics of Spring and Hibernate. So all this will be, these are some advanced
topics, so it will be covered under Java Advanced. And let us not waste time discussing about what is Java Advanced and what is Hibernate Spring. We'll come to know when we go to that level, and when we complete our front end and Java code, it will be much easier for you all to understand. So coming to database, there are many softwares: Oracle, SQL Plus, PLSQL, MySQL. So I personally will be using MySQL, and I'll be teaching you what is SQL, what is RDBMS, what is TBMS, how to make tables, how to perform actions on database, joins, subqueries, queries, what are queries, everything will be covered under MySQL. So I hope you will be enjoying with me the lectures I will be providing you, and you will be able to understand and learn from that lectures. And my notes, I will be providing you the notes of that particular lectures. At the end of the video, I will be giving you some notes in the description. I won't be providing you the notes beforehand, because if I'll do that, you won't be able to enjoy the video, and you won't be able to enjoy the projects, whatever I'll be doing with you all on computer screen. So I hope you'll enjoy my rest of the videos, and please do subscribe and like my channel, and give me some hope that I can teach you more. In fact, I'll teach you many more things, and you'll be enjoying with me throughout the courses. So please follow me, subscribe me, like me, and press the bell icon.